+3 5th सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स DSE 2 बा डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव 2 रो यूनिट 3 जहाँकि सोशल मुवमेंट्स चैप्टर किसी इंपोर्टेंट 3 मार्क्स क्वेश्चन आंसर पीटी बा नोट्स कि पाई पारे। तो चलते स्टार्ट करवा। तो फास्ट टाइम देखिए व्हाट इज सोशल मुवमेंट। सोशल मुवमेंट माने कौन? सोशल मुवमेंट्स आर द टाइप ऑफ लार्ज ग्रुप एक्शन गोटे कौन बड़ ग्रुप एक्शन आम कहीपर। दिज मुवमेंट्स आर कलेक्टिव बिहेवियर ऑफ द पीपल हु सेड कॉमन ट्रिटीज कम्प्लीट ऑफ पार्टी कौन लोक जमा होते से गोटे ही माने एक्शन थी कलेक्टिव एक्शन बिहेवियर they have also their objective also some form of change in the way of people according to their thought belief and behavior. Some movements however as their objective the protection of existing value and norms which appear to be threatened of revolution in nature. तो किसी ग्रुप ऑफ लोक मैंने जमा होते से गोटे आइडियोलॉजी थी गोटे ही कलेक्टिव बिहेवियर थी जोटा कि सोशल मुवमेंट आम कहीपर। सोशल मुवमेंट मैंने कौन गुड़ाई डिस्कसन जपरिक चिपको आंदोलन आपिको आंदोलन ये सब आम आस्ते आस्ते आगे देखा। तो नेक्स्ट टाइम देखिए व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स जो सोशल मुवमेंट हुए तार कैरेक्टरिस्टिक्स कौन ना कलेक्टिव बिहेवियर ऑफ पीपल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इट ब्रिंग्स प्रोग्रेसिव चेंज इट एडॉप्ट्स कन्फ्रंटेशनल टैक्टिक्स इट्स आइडियोलॉजी बेस्ड ऑन इन्वॉल्व्स पॉलिटिकल एक्टिविटी। नेक्स्ट टाइम देखिए व्हाट इज स्ट्रक्चरल स्ट्रेन थ्योरी ऑफ सोशल मूवमेंट। सोशल मूवमेंट स्ट्रक्चरल स्ट्रेन थ्योरी कौन ना स्ट्रक्चरल कंड्यूसिवनेस पीपल कम टू बिलीव द सोसाइटी हैज प्रॉब्लम लोक विषय आम सोसाइटी आम समाज असुविधा अच्छी। स्ट्रक्चरल स्ट्रेन पीपल एक्सपीरियंस डिप्राइवेशन ग्रोथ एंड स्प्रेड ऑफ सॉल्यूशन लैक ऑफ सोशल कंट्रोल मोबिलाइजेशन। नेक्स्ट टाइम देखिए व्हाट इज रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी। तो रिसोर्सेस मोबिलाइजेशन थ्योरी कौन ना रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी emphasizes on the importance of resources in the social movement and success. Her resources include knowledge, money, media, labor, solitary legitimacy, and internal and external support from power elite. That theory argues that social movements develop when individuals with given are able to mobilize sufficient resources to take action. What is political process theory? Now, political process theory emphasizes a different component of the social structure that is important for social movement for development. Political theory मतलब social movement and development पे important. It argue that जो political process theory argue करे that there are three vital components for movement formation. These are insurgent consciousness, organizational strength, and political opportunity. नेक्स्ट टाइम देखिए व्हाट डू यू मीन बाय फार्मिंग थ्योरी। तो फार्मिंग थ्योरी कौन ना द फार्मिंग थ्योरी हैज ब्रॉट सच सेट अंडरस्टैंडिंग टू द फोरफ्रंट ऑफ द अटेम्प्ट ऑफ अंडरस्टैंड मूवमेंट creation of and extends. It refers that successful mobilization of individual is necessary for social movement. They must develop an unjust farm. An unjust farm is a collection of ideas and symbols that illustrate both how significant the problem is as well as the how what the movement can do to elevate it. What is Marxist approach on social movement? Social movement Marxist approach कौन ना Marxism is an ideology and theory of social change which had no an immense impact on the practice and the analysis of social movement. Marxists believe that conflicting economic interests in the society are central to social movements. Many of them have tried to associate ethnic, religious, and cultural factors of social movements. Some of them stated the nature of the consciences of the exploited classes. तो मैक्सिमम कौन है क्लास करते किसी क्लास अच्छी जो कि पुअर क्लास को एक्सप्लोमेंट करती एक्सप्लोय करती। ओके व्हाट इज लिबरल अप्रोच। लिबरल अप्रोच कौन ना लिबरल अप्रोच सोशल मूवमेंट्स इज लेड एम्फासिस ऑन द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड कल्चर। इट व्यूज दैट द न्यू सोशल मूवमेंट एज ए पार्ट ऑफ लार्जर फ्रीडम प्रोजेक्ट। अकॉर्डिंग टू लिबरल अप्रोच हिसाब से मोस्ट ऑफ द सोशल मूवमेंट जो गुड़ाए सोशल मूवमेंट है मोस्ट ऑफ द सोशल मूवमेंट आर डायरेक्टेड टू क्लेम फॉर राइट्स एंड सोशल गुड्स। डेमोक्रेसी इज अनदर फोकल पॉइंट ऑफ दिस मूवमेंट। द डिमांड इज फॉर बेटर डेलिब्रेशन एंड डेमोक्रेटिक एनवायरमेंट is made by social movements. Next time देखिए write about Gandhian approach on social movement. तो bounded in 1988 has called Gandhian approach as Gandhian dialectic. According to Gandhi सत्याग्रह वाज जो गांधी को सत्याग्रह आंदोलन थिला was a dialectical process where non violent अहिंसा द्वारा हितला action engage existing structure काहे ना हम जानछती मेनली सोशल मूवमेंट गुडी कोन हमर किछि जेपरि कि कोन थाय हमर हम कहि पारे कोन भायोलेंस टाइप थाय रेवोल्यूशन थाई ओके विद्रोह सोसाइटी होती किंतु गांधीजी सत्याग्रह को अहिंसा माध्यम करते। So structured power the truth seeking struggle he advocated for non-violent allegating to end to British rule in India
he protested against modernity and capitalist economic system. His policy of complaint openness in both interpersonal and media communication reduced to the threat and suspicion. Next देखिए what are the characteristics of a new social movement. तो new social movement characteristic कौन रही तो they are concerned with the individual and collective morality. The new social movements are multi classes. It is continued into concern with the civil society. They are primarily concerned with the self identity and autonomy of individual community. Next what are the methodology of a new social movement. The new social movements have evolved an effective methodology of working with the disadvantaged sections of society. In this way it helps to grow an alternative agency of change. The methodology of social movements are critical intervention, creative and action of the participation of mobilization. Next देखिए right of civil society and new movements. The accession of a new social movement in the contemporary world is clearly linked with the concept of civil society. Many of the new social movements, the new movements have their major trust against the state rather than the private property based on capitalism or the market. It stresses the efforts of groups and section is a highly state dominated society to fight for a space for democratic control and autonomy. इतना new civil society and new movements, new social movement and state. तो new social movement कौन state कौन की बताए. The state is a primary and unavoidable agent in the production of relation of the domination in race, gender, sexuality and environment. The new social movement state हम जानते हैं state को कौन गोटे primary and unavoidable जहाँ को हम avoid कर पारिबानी state को से agent गोटे. The new social movement struggle activity to block and remark this mechanism of a subordination. Many social movements also respond to people possession with a sense of injustice. Many of the political and forces emanate from the world economy in crisis. Significantly, people increasingly regard the state and its institutions, particularly political parties, as ineffective. Next, what is Gorkhaland movement? The Gorkhaland movement proposed for a new state that embodies the regions, namely Darjeeling, Kalimpong and Kurseong. The demand for Gorkhaland first across in the 1970s. First demand होइतिला. The rationale behind the Gorkhaland movement is the preservation and development of language, culture and identity of Nepalese minority group of West Bengal. The whole fight of Gorkha community reflects their centuries old struggle to secure identity and gain a respectable place in federal India. What is Sahabano case? Sahabano is 62 years old Muslim who is the mother of 5 children from Indore. तो साहबानो कौन 62 वर्षर मुस्लिम मरिया जे कि 5टी संतान माँ थे इंडोर. ओके मध्य प्रदेश वाज डाइवोर्स बाय हर हजबैंड इन 1978 1978 हजबैंड डिवोर्स देते. सी फिल्ड ए पिटिशन एट द लोकल कोर्ट as she had no means support herself and her children. However, the local court directed her husband to pay 25 per month as for maintenance on July 1, 1980. The High Court also enhanced her maintenance 179.220 per month. But in 1986, the Supreme Court nullified the Parliament Act 1986 under the pressure of Islamic orthodoxy. तो ये साहबान केस जो मैंने साहबान केस तो गुड़ा रही आप कमेंट करूँ साहबान केस को नहीं आम गोटे केस स्टडी आने. ओके बर्तमान आप इंपोर्टाट डेट गुड़ मन रखी कहीं एग्जाम वन मार्क्स आसपे. नेक्स्ट टाइम देखिए व्हाट इज बिश्नोई मूवमेंट. बिश्नोई मूवमेंट कौन. द बिश्नोई मूवमेंट वाज लेड डाउन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर. द फॉलोअर्स ऑफ गुरु जाम्बेश्वर महाराज आर नोन एज बिश्नोईज who from the small community in the Rajasthan. Bishnoe मैंने कौन राजस्थान राजस्थान small community गुरु जाम्बेश्वर महाराज जी की विष्णु भाई जनसना in 1761 1761 रे अमृता देवी along with the other village came from the stop to cutting of trees. In this movement many men, women and children sacrificed of their life for protecting trees. तो कौन कले जो विष्णु आंदोलन कौन कले मैंने अमृता देवी ताके आसिले गछ काटिया बंद करने कहले पर सहित गुड़ाए पुरुष महिला चिल्ड्रेन जोगदेले पर से निजर साक्रिफाइस बलिदान आंदोलन देते.
However, the king had the sacrifice of Bishnoe and prohibited the cutting of green trees and hunting in Bishnoe villages. What is the Silent Valley of project? Silent Valley project कौन? नीरव जो Valley project कौन? Silent Valley was a social movement to protect the Silent Valley, an evergreen tropical forest in Palkan district of Kerala. It was started in 1973 to save the Silent Valley Reserve forest from being flooded by hydroelectric project, when the government declared the construction of the dam and the central point became the safe Silent Valley. Later on, the Prime Minister of India decided to abandon the project and Silent Valley forest was declared a national park in November 1594. तो पर सरकार देखले पर यहाँ कौन ना जो साइलेंट भैली को नेशनल पार्क रूपे घोषणा कले ताहा नवेम्बर 15 1984 घोषणा करदे। तो ये किसी 3 months क्वेश्चन नोट्स जो मैंने कि नोट्स चाहती डिस्क्रिप्शन में मुझे टेलीग्राम चैनल लिंक दे देछि आपण जॉइन होकि नोट्स डाउनलोड करेंगे। थैंक यू टू ऑल फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट टाइम सोशल मूवमेंट्स पार्ट 2 देखिबा।